So in the last session we have completed till the systems of governments. In this session we will continue with the preamble of the constitution. तो preamble रे बहुत गुड़ा values थाए तो तार deep understanding रहिबा दरकार तो एटा हम टे भल से बुझिबा तार values गुड़ा को देखिकी. Okay, so let us start. Introduction. Preamble was based on the objective resolution draft and moved by Pandit Nehru and was adopted by the Constituent Assembly. So Nehru moved the draft on 13th December 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हिसाब रे ही हमरो प्रिएम्बलटा लिखा है प्रिएम्बलटा अडॉप्ट करा हैतला. ओके, so it was enacted after the rest of the constitution was enacted to ensure coherence and conformity with the rest of the constitution, so that there is no difference of values between what is written in the constitution and what is the given in the introductory statement. It was amended only once in the 42nd CAA 1976, which added the terms socialist, secular and integrity. It reflects the dreams, visions and aspirations of the founding fathers of the constitution. Alright, so preamble lo kon limitations achi. Preamble does not give the government any power. Okay, it does not grant any authority to the executive, either to the legislative or neither to the judiciary. It cannot override the provisions of the constitution that are explicitly mentioned in the constitutional articles. Alright, they are the values of the preamble. They are non-enforceable, again not justiciable in courts, but they can serve as a clarificatory role, because if there comes a situation where there are ambiguous statements in the constitution, or there is a conflict between two values given in two areas, two or more areas in the text of the constitution, then we can refer to the preamble to gain clarity. Okay, जदि constitution रे को जगह vague term अच्छी कि in general term अच्छी कि specified describe करा है नहीं कि ambiguous terms अच्छी जोटा कि कोर्ट रे डिबेटेड है परिबो, तो कोर्ट कैन टेक रेफरेंस टू द preamble for clarity of what is written in the constitution text. Okay, now constitution day संविधान दिवस एटा 2015 रु सेलिब्रेट करा होची. ओके, 2015 रु सेलिब्रेट करा होची. डेट इज द 26 November, that is written in the preamble only. So its purpose is to, it commemorates the adoption of constitution in 1949 and that promotes the constitutional values. So this date, constitution day, was declared by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Please note this point, Ministry of Social Justice and Empowerment. किसी जदि important ministry देथिबो ऑप्शन रे कि Ministry of Home Affairs. Okay, तो सेमती नो MOSJE declared the constitution day and it has been celebrated since 2015 on 26 November. So what are the components of the preamble? So preamble रे कोहा हिची source of authority, we the people of India are the source of authority of the constitution of India. Okay, we the people of India have given to ourselves this constitution, so source of authority is mentioned in the preamble. Nature of the state is sovereign, socialist, secular, democratic republic. Objectives of the constitution, that is justice, liberty, equality and fraternity, these values we will study. And date of adoption 26 November 1949. Okay, 1949, 26 January 1950, that is the Republic Day. Philosophy of the constitution, that is Gandhian Swaraj, self-reliance, justice, tolerance. Again we will see these values in the later text. So significance of the preamble, बहुत जगह रे preamble significance कहुची. It is the summary and philosophy of the constitution. It is key to the framers' minds, that is given by Supreme Court. Okay, एटा मुझे एमती कहली तुमर जदि को जगह रे vague and ambiguous आउ तांके भितर conflicting values जदि आछि जो थरे कि ambiguity अछि, then preamble will serve as the key to the mind of makers of the constitution to gain clarity. And it also serves as the identity card of the constitution, that is the summary of the values of the constitution, what the constitution stands for. It was said by N.A. Palkhiwala. Horoscope to our sovereign Indian democratic republic, that is K.M. Munshi said this, that preamble जो value गुड़ा अच्छी, the Indian states should aspire to implement those values in letter and spirit. So the preamble, in other words, can serve as the horoscope of our nation. तो आमे को दिगो को जीवा, तो से को दिगो को जीवा सेटा गाइड करे हमार preamble. Keynote to the constitution by Sir Ernst Barker. So he is a British
पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्कॉलर सो तांकर वर्क रे सी तांकर बिगिनिंग रू ही इंडियन प्रिएम्बल को इंट्रोड्यूस करते बिकॉज ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन प्रिएम्बल ओके सर अर्नस्ट बार्कर गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन गिवन बाय जस्टिस सिक्री इन द केशवानंद भारती केस सो देख बेरुवारी केस रे ये तुम केस लर इवोल्यूशन आम लास्ट को देखिए बट गोटे कहीदे तुम बेरुवारी केस रे सुप्रीम कोर्ट कही जे प्रिएम्बल इज द गाइडिंग लाइट फॉर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ओके एटा केशवानंद केस रे कही बट गोटे आइडिया आसपार जे बेरुवारी केस रे सुप्रीम कोर्ट कही दैट प्रिएम्बल इज द एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन it is based on the basic elements the constitution is based on the basic elements mentioned in the preamble if any of the elements are removed or modified then that the structure of the constitution will not survive and it won't be the same constitution as it can maintain its identity okay तो एथरू तुम बेरुवारी केस रू आम जानी पारथवा जे प्रिएम्बल रे ही तुमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जोटा कि आम लास्ट सेशन पढ़ी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन रा आइडिया तुम प्रिएम्बल रू ही डिराइव करी हबो ओके से जिनसटा सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करथला बेरुवारी केस रू ही ओके ये जिनसटा मन रखियो आ केस लगुड़ा आम तार इवोल्यूशन पर पढ़ा लास्ट को ओके नाउ कीवर्ड्स इन द प्रिएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया सो इट एम्फासाइजेस दैट पॉपुलर सोवरेनिटी दैट पावर लाइज विथ द पीपल we the people of India have given to ourselves this constitution okay so we are a sovereign body nobody is ruling over us we have given to ourselves this constitution is made by the people and for the Indian people okay and citizens are the ultimate source of constitutional authority okay eta ame kahilu already we are the sovereign people the citizens have given to ourselves this constitution and it ensures that governance aligns with people's well-being because people have made this people have given the constitution to themselves so it is expected that the constitution should work for the well-being of the people okay now comes the term sovereign so sovereignty ro jo idea achi constitution रे कोठी भी sovereignty of India ऊपर मेंशन नहीं except the preamble please note this point okay so constitution रे केवल preamble रे ही sovereignty रो आइडिया दिया है so what is sovereignty okay India is a fully independent state and not subject to any external control okay तो इंडिया रो जहाँ भी डिसीजन नब जहाँ भी कर फ्यूचर में ताको आउ कहीं कहीकि करेनि ओके इंडिया इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीबडी एनी अदर कंट्री एज सच independence in affairs it is free to decide its internal and external policies and India can again sovereignty means it can acquire it is free to acquire foreign territory also it is free to cede territory to other nations but through constitutional amendments okay so international relation रे भी membership of Commonwealth of Nations with British Crown as the head it does not affect sovereignty okay because तमर जिते बड़े Commonwealth रे भी after independence Indian Constituent Assembly they approved the membership to Commonwealth of Nations but that does not define कि आमे तांको अंडर रे काम करिवु we were associated with them out of our own will okay it does not affect our sovereignty and membership the UNO also does not reduce our sovereignty United Nations हो कि तमर अलगा treaties and conventions हो it are just but कहिया कथा but in reality तुम जब reality देखिवो today आज present day no nation is actually sovereign because is actually sovereign in the traditional sense because traditional terms रे तमर गोटे nation जहाँ इच्छा से कर परिवो ता territory under रे okay जहाँ इच्छा से कर परिवो but आजिका डेट रे बहुत रे ट्रिटीज कन्वेंशंस तमर ओब्लिगेशन अच्छी दैट पुट रेस्ट्रेंट ऑन मेंबर्स दैट लीड टू इरोजन ऑफ सोवरेनिटी सो इन टुडेज टाइम्स इन रियलिटी नो नेशन इज एक्चुअली सोवरेन बट दिस इज द सोवरेनिटी एज द प्रिंसिपल दैट इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ सोवरेन कंट्री बिकॉज जिते बिकज जो इंडिपेंडेंस आसला से कॉलोनियल टाइम्स था तो बिकज कॉलोनियल टाइम्स ही फ्रीडम डिक्लेयर करने यहाँ को डिक्लेयर करवा बहुत नेसेसरी था ओके दैट्स व्हाई दिस वैल्यू वाज इनसाइड इनटू द प्रिएम्बल ना कम्स द वैल्यूज ऑफ एटा गोटे सोवरेनिटी गोटे वैल्यू गला नेक्स्ट सोशलिस्ट एज ए वैल्यू ओके सो अगेन सोशलिज्म डेफिनेशन बहुत कन्फ्यूजन थाए ओके तो
तो कौन होना तुम socialism as a value was not initially introduced into the constitution because the founding fathers did not want the constitution to be associated with any particular ideology or okay, or limited by any economic doctrine. Okay, that's why they did not they did not include socialism into the preamble. But जब तुम preamble text देखियो तो preamble did mention that it wants to secure to its citizens economic justice, social justice, political justice. Okay, so these ideas were already enshrined, these ideas of socialism were already enshrined in the preamble. Okay, again तुम देखियो sovereignty पर socialism is given the highest value, highest place of honor to the after sovereignty. So socialism has not been defined in the constitution, but it has been accorded highest value after sovereignty. So socialism कौन तापर टिके जानी दवा हमर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म हमर कौन सोशलिज्म अडॉप्ट करा हिची. ओके, तो सोशलिज्म रो देखो इट इज ए हॉच पॉच ऑफ आइडियोलॉजीज, एटा कह जाए हॉच पॉच ऑफ आइडियोलॉजीज एंड सोशलिज्म रो बहुत गुडे फॉर्म अछि. तो आम जस्ट दुईटा टाइप देखिए ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. बट सोशलिज्म रो तुमर बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया इज सोशलिज्म वांट्स टू फ्री एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और exploitation like social exploitation, economic or political exploitation, everything. Socialism ro basic idea, okay, basic idea is socialism is advocating for equality among individuals. Alright, socialism ro basic concern is with respect to equality. Okay, so India re socialism ro idea is it aim to eliminate inequality of income, of status or standards of living. Okay, so after the inclusion of socialism as a basic idea in the constitution, so after that the courts in their interpretation of constitution also lent more in favor towards nationalization and state ownership of private assets, private industries, and right to equal pay for equal work. Okay, ये सब जिनस गुड़ा सोशलिज्म रो बेस जे every individual is equal. Okay, so that is the basic concern of socialism. So by definition, economic and political system where state ownership of production aimed at social equality. So samasthe equal hi, so that is the idea of socialism. Democratic socialism means mixed economy, that is coexistence of public sector and private sector, that is the India's model. Out socialism is communistic socialism, means total nationalization of all the assets, for example China in earlier times. Okay, तो Indian socialism तो देखो जदि तुम टे बुझा चेष्टा कर तुम फास्ट कैपिटलिज्म आसला. कैपिटलिज्म रे कौन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जी भल कला सी भल कर, जी कंपिटिशन रे तिष्टि पारिबनी सी जीव. तो यहाँ बहुत एक्सप्लोटेटिव और कटथ्रोट कंपिटिशन है से तुम आइडिया आसला जे नाई तुम बहुत एक्सप्लोटेशन हो तो तापाई कि गोटे कैपिटलिज्म को काउंटर करने सोशलिज्म एज एन आइडिया इवॉल्व है. बट ये जो सोशलिज्म एज एन आइडिया इवॉल्व है से बहुत गुड़े आइडियोलॉजीज आसिक मिसीगले. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉच पॉच ऑफ आइडियोलॉजीज. तो किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन ना. ओके, तो जब तुम पचार बेले मार्क्सिज्म कौन, सोशलिज्म कौन, तो मार्क्सिज्म की जोटा कम्युनिज्म दैट इज ए काइंड ऑफ सोशलिज्म. ओके, सोशलिज्म रो बेसिक जोटा होची इक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल्स. सोशलिज्म इज कंसर्न्ड विथ इक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड द वर्सन ऑफ सोशलिज्म गिवन बाय कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड कम्युनिज्म. ऑलराइट, तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म भितर एटा डिफरेंस. कम्युनिज्म इज ऑल्सो मार्क्सिज्म, that is the version of socialism advocated by Karl Marx. Okay, and socialism ro basic concern कौन, it is concerned with equality among individuals because capitalism रे exploitation होउथला, inequality बहुत रहउथला. तो सही सब जिनस गुड़ा काउंटर करिया पे socialism as an idea evolve हैला. Okay, so Indian version of socialism, it is an approach, it is a blend of both Marxism and Gandhism. Okay, Marx and the goal of the Indian socialism is to end poverty, ignorance, disease and inequality. Okay, Marx said that state is the instrument of oppression
and Marx advocated class struggle and revolution, violent revolution for stateless society. Okay, Marx said that state is the instrument of the capitalist class to exploit the workers. Okay, so workers should engage in a violent revolution and overthrow the state. Okay, that is the idea of Marx, and the idea of Gandhi is violence. He never went for violence. He always advocated non-violence, and he even opposed minimal state. Okay, जदि स्टेट रहिबो ताकि पई किछ आर्मी मेंटेन करिया पड़िबो तो से टिके भी आर्मी रहिले दैट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, एंड सो दैट्स व्हाई गांधी वाज अगेंस्ट द स्टेट. Okay, so you can see that both Marx and Gandhi were against the state. They were both anarchist. Okay, but Gandhi is a moral anarchist, and Karl Marx is a revolutionary. Okay, but Gandhi favored strengthening local self-governance. Local self-governments, that is, he wanted self-sufficient village republics. Okay, and he कहते जे इंडिविजुअल एते एम्पावर हो जे स्टेट रो दरकार ही पड़िबोनी. सो गांधी चाहते जे इंडिविजुअल ही एम्पावर्ड हो. ओके, दैट इज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म फॉर गांधी. ओके, आउ तुमर सोशलिज्म रा आइडिया कोठी कोठी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे ऑलरेडी एवडा थिला, जोटा कि डीपीएसपी रे सोशलिज्म रा आइडिया कोठी कोठी अछि. आर्टिकल 38 जेमती state should secure a social order where justice, social, economic and political should inform all institutions. Article 38 clause 2 रे भी to minimize instruction अच्छी to minimize income inequality in status, opportunity etc. Article 39 रे जेमती तमरो social economic justice means of livelihood, distribution of resources for common good, no concentration of wealth, equal pay for equal work, ये सब values. Article 39 है equal justice and free legal aid. Article 41 right to work, education, public assistance to those in need. Article 42 means to Article 42 is the working conditions, just and human working conditions, and plus maternity relief also. Okay, एटा मन रखिबा. Article 42 रे maternity relief रो provision भी अच्छी. Okay, Article 43 तमरो living wage, decent living standard, leisure and social or cultural opportunities for workers, ये सब. Article 43A participation of workers in management of industries. Article 47 increase the living standards of the people, not to sell intoxicants, and better nutrition of the people. Okay, raise the standard of nutrition of the people. Okay, तो जो हमारा जो इंटॉक्सिकेंट की मद बिक्री होची that is against the DPSP number 47. Okay, so these DPSP तो देखिला आम यो जहाँ भी सब आम DPSP देखिले तुम इंडिविजुअल मानकर कंडीशन को इम्प्रूव करने कि इक्वालिटी अमंग इंडिविजुअल्स को प्रमोट करने ये सब स्टेप्स नियाई. सो दीज आर द आइडिया ऑफ इंडियन सोशलिज्म. ओके, सो आई थिंक सोशलिज्म उपरे आम कवर कले. देन कम्स द वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू दैट इज सेक्युलर. ओके, सो सेक्युलरिज्म. सो सेक्युलरिज्म भी सेमती किसी डेफिनेशन ठीक से नहीं, बट मुझे डायग्राम दे दूची. जस्ट एटा तुम मन बुझिया जिनसा सुविधा हम कि तुम एटा मेन्स रे भी तुम कौ आंसर भी सेक्युलरिज्म पर पढ़ले तुम एटा लिखिपर. गोटे ट्रायंगल कर दिव. एथिरे गोटे होची रिलीजन, गोटे होची स्टेट, आ गोटे होची इंडिविजुअल. ओके, रिलीजन, इंडिविजुअल, स्टेट. तो तुम ए टाइप रिलीजन अच्छी तो ओके, तो देख गोटे तुम इंडिविजुअल और स्टेट भितर तुम रिलीजन विल नॉट इंटरफियर. ओके, तुम रिलीजन और इंडिविजुअल भितर स्टेट विल नॉट इंटरफियर. ओके, आउ रिलीजन और स्टेट भितर रिलेशन केमिति रहिबो दैट डिटरमाइंस द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. ओके, रिलीजन और स्टेट भितर तुमर जदि नेगेटिव कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, दैट इज न्यूट्रलिटी कि इंडिफरेंट. स्टेट इज न्यूट्रल और इंडिफरेंट टू रिलीजन. ओके, यदि सेमती हला देन दैट इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. Positive concept that has been adopted by India, that is the principal equidistance model. Okay, principal equidistance means तुम्हें को रिलीजन को प्रिफर करना कि कहा को भी तल नीचा देखो. यू आर इक्वली
equally respecting all religion. You are not indifferent towards religion, but you are equally respecting every religion. जेमती तमर रथयात्रा बेले तमर श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन से रथयात्रा ऑर्गेनाइज करिवो ओके जेमती तमर जदि ईद हो ईद रे ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करिया पई हॉलिडे डिक्लेयर कर जीवो बाय गवर्नमेंट ओके तो को रिलीजन को प्रिफर करबनी कि को रिलीजन को डाउन करबनी प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस ओके इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स नॉट इंडिफरेंट टू एनी रिलीजन ऑलराइट तो ये डायग्रामटा तुमर करने भल तुम रिलीजन इंडिविजुअल और स्टेट करदेव तो ए टिप्रु ये रिलीजन ए टिप्रु ये स्टेट ओके आउ रिलीजन और स्टेट भितर संपर्क केमती जदि इंडिफरेंस देन नेगेटिव कॉन्सेप्ट जदि प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस देन दैट इज द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म ओके सो इंडियन सेक्युलरिज्म कौन माने equal treatment of all religion without discrimination okay Indian secularism seeks to establish a synthesis between the legitimate functions of religion and the legitimate and expanding functions of the state okay तो religion रो किछि यूज अछि ठीक स्टेट रो भी किछि यूज अच्छे ठीक तो इंडियन सेक्युलरिज्म दी जन को बैलेंस करिके चले ओके जदि एक्सपांडिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट बिकॉज जदि स्टेट को दरकार पड़ला ये जगटा को एक्वायर करियार अछि देन इट कैन साइडलाइन रिलीजन एंड एक्वायर दैट लैंड ओके तो दीटा वैल्यूज भितर को दीटा वैल्यूज भितर को स्टेट रो फंक्शन और रिलीजन फंक्शन को हार्मोनाइज करे इंडियन सेक्युलरिज्म ओके तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे explicitly add karagala secular word to the preamble okay positive secularism that is the Indian model equal status and support for all religions okay every religion is recognized equally irrespective of majority or minority as I have already explained legal standing secularism is part of basic structure doctrine okay okay एटा हमें देखिबा okay तमर सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गोटे जिनस मन रख तमर फर्स्ट टाइम तमर केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस रे ही फर्स्ट टाइम रिलीजन ओ सॉरी सेक्युलरिज्म वाज मेंशन्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो यहाँ जिन मन रखियो केशवानंद भारती केस रे ही फर्स्ट टाइम रिलीजन वाज मेंशन्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन मिनर्वा मिल्स केस ऑल्सो सेक्युलरिज्म वाज डिक्लेयर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तमर एसआर बोमाई केस रे भी से दिन मेंशन होता बट फर्स्ट secularism as a basic structure of constitution was mentioned in the Keshavananda Bharati case just remember it as a fact okay tomorrow this idea of secularism is also implicit in article 25 clause 2 जो thare ki state is empowered to regulate or restrict any secular activity associated with religious practice okay eta tomar diya hi and अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स रे भी तुम यहाँ इंटरप्रिटेशन आसपार सेक्युलरिज्म जमी आर्टिकल 15 और 16 पूरा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मना कराई आर्टिकल 19 हो आर्टिकल 25 आर्टिकल 24 इवन तुम यूसीसी आर्टिकल 44 ओके तो देख तो प्रिएम्बल तार ओरिजिनल जो फॉर्म रे देख प्रिएम्बल ता ओरिजिनल फॉर्म रे भी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एटा गारंटी करथला तो ओरिजिनल फॉर्म रे भी सेक्युलरिज्म रो आइडिया इनहेरेंट थिला प्रिएम्बल रे ओके तो सेमती किछि बेसी चेंज हेनी तो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म वाज इनहेरेंट इन द प्रिएम्बल फ्रॉम द बिगिनिंग आल्सो ओके देखिए इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सो डेफिनेशन Indian secularism impartiality towards all religion rooted in ancient traditions of religious tolerance okay but western secularism it emerged as a reaction to the religious wars between the church and the state okay ये जिनसा मन रख it emerged out of religious wars in western secularism religions in India state can support and participate in religion activities okay but strict separation state prohibits involvement in religious matters as I have already said negative concept of secularism okay Indian is the positive concept this is the negative concept display of religion freedom to practice but limited public display okay limited public display means the display of religion should not disturb the public order or national unity or integrity okay but western secularism generally restricts public religious displays you should practice religion in your private life okay state intervenes to eliminate harmful practices in religion okay non intervention unless laws are violated jodi laws violate hala tahale hi
religion रे interfere करिवो but states intervenes to eliminate harmful practices in India. For example तमर जमती चाइल्ड मैरिज हो कि तमर एंट्री ऑफ वुमेन हो कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो को रिलीजन रे तो सेटा को दोज रिलीजियस मोरालिटी इज लेसर देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ओके सो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ग्रेटर देन रिलीजियस मोरालिटी. सो स्टेट इज अलाउड टू impose constitutional morality and reform religion also. Okay, code of law and relation with law, personal laws vary by religion to accommodate multiple religious principles. Okay, western the uniform legal code, laws are independent of religion. Religion and society, religion as an integral to society, and western it is a private matter. India addresses both intra and inter religious issues. Okay, but western concept primarily addresses intra religious matters. Okay, तुम रिलीजन भितर तुम जहाँ कर तुम किसी असुविधा ना, बट इंडिया रे तुम बोथ इंटर एंड इंट्रा रिलीजियस इश्यूज बिकज ये बहुत डाइवर्सिटी अच्छी बहुत हिस्ट्री अच्छी तो ये इंटर और इंट्रा रिलीजियस इश्यूज दुईटा को मैनेज करने को इम्पोर्टान्स हो जाए. ओके, तुम जमी देख तुम जमी पब्लिक रिलीजन पब्लिक डिस्प्ले रे किसी डिस्प्ले करिया मना तो तुम भितर रिलीजन रे जहाँ कर. ओके, that is allowed in western secularism. Rights and influence unless it violates the law of the land. Okay, rights and influence protects individual and minority rights. Religious groups can influence politics. Okay, please note this. But in western it emphasizes on overall liberty. Religious bodies have limited role in government. Okay, तो इंडिया रे जम तुमरो रिलीजन बेसिस रे हो कास्ट बेसिस रे हो तुमरो वोट बैंक पॉलिटिक्स की वोट मोबिलाइजेशन पे रिलीजन कैन बी यूज्ड एज अ टूल. ओके, टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स. नाउ democracy. Democracy is a value. By definition, citizens enjoy equal political rights, elect rulers and hold them accountable. Okay, so democracy माने ही that the rule of people. Okay, democracy means rule of people. So democracy रो basic idea होची जे since time immemorial, okay, human beings have fought with each other for power sharing. Okay, and for supremacy. Okay, so democracy tries to substitute this fight with a more civilized manner. Okay, through the methods of discussion, persuasion. Okay, thus replacing the methods of armed conflict and violence. Okay, so in democracy the ballot can substitute the bullet. Okay, डेमोक्रेसी रे बैलट सब्स्टिट्यूट्स दी बुलेट. ओके, सो ये जिनटा तुम लिखिपर तुम मेन्स रे भी. ओके, सो सिटीजन्स एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. ओके, बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज पीपल विल रूल देमसेल्व्स. सो पीपल हैव ए राइट टू सिलेक्ट हु विल रूल ओवर देम. ओके, सो द सुप्रीम अथॉरिटी लाइज विथ पीपल. ओके, डेमोक्रेसी माने रूल ऑफ पीपल ओनली. ओके, सो डेमोक्रेसी बहुत गुड़ा अच्छी सब्सटांसिव डेमोक्रेसी अच्छी, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी अच्छी, बट दिज आर नॉट इंपोर्टेंट. तो फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा गोटे हूँ देख दुईटा जिनस गोटे हूँ डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, गोटे जिनस मन रख जो डेमोक्रेसी रे इलेक्शन है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, इलेक्शन हुए ही लोक मैंने निजर रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, दैट रिप्रेजेंटेटिव will keep the voice of people in front of the parliament. Okay, जो डेमोक्रेसी रे इलेक्शन हैला then that democracy is indirect democracy. अदरवाइज अलग डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे इलेक्शन हवा दरकार नहीं, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हवा दरकार नहीं, लोक मैंने निजे डायरेक्ट वोटिंग करेंगे. ओके, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. स्विट्जरलैंड तो तार केतरा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज इनिशिएटिव, सिटीजन प्रपोज लॉज फ्रॉम देयर ओन साइड, दे रिकॉल, दे रिमूव ऑफिशियल्स बिफोर देयर टर्म, सिटीजन्स विल डू इट. रेफरेंडम, voters accept or reject the law. Okay, लोक पचरा तो लोक विल भोट डायरेक्टली. ओके, लोक मैंने निजर डिसीजन डायरेक्ट देवे. प्लेबिसाइट, डायरेक्ट भोट ऑन मेजर पॉलिटिकल इश्यूज. ओके, प्लेबिसाइट रे कौन खाली डिसीजन नि जाए लोकंकर, से डिसीजन रे काम हम कि हेनी सेटा डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट. ओके, रेफरेंडम रे तुम भोटर मान डायरेक्ट पचरा जाए और भोटर मानकर जहाँ भी ओपिनियन अकॉर्डिंगली काम करा जाए. फॉर एग्जांपल दी ब्रेक्सिट. ओके, प्लेबिसाइट रे तुम पचरा जीव बट डिसीजन मे बी नब कि नब से डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट. ओके, रिकॉल, रिमूव ऑफिशियल्स इफ दे आर इनएफिशिएंट, इनिशिएटिव, सिटीजन प्रपोज द लॉज फ्रॉम देयर ओन साइड. ओके, तो यहाँ मन रख जो इलेक्शन है सेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इलेक्शन हुए ही लोक मैंने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे. ओके, दैट रिप्रेजेंटेटिव विल रिप्रेजेंट द पीपल इनडायरेक्टली. ओके, इंडियन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, पार्लियामेंट्री
Indian democracy has parliamentary features. Okay, so what are the features of Indian democracy? That is universal adult franchise under Article 326. Periodic elections way, rule of law is given by AB Dicey, judiciary is independent, non-discrimination. Okay, we have seen these values, Indian democracy. So comprehensive approach. So political rule of people, social rule of people and economic democracy, economic rule of people. So ये तीनटा जिनस political, social and economic एटा में justice और equality देखला बेले एटा हम भलसे आउ थरे बुझिबा. तो social, economic and political justice एई जदि justice हेई पारला social, economic, political ताहाले ही तमरो democracy आस पारिबो social, economic and political. Okay, so ये जिनसटा हमें देखिबा या परे. Okay, Supreme Court 1997 declared that constitution aims at an egalitarian social order. Okay, egalitarian social order. Democracy of virtue is it activates the intelligence and character of ordinary citizen. Okay, decision making capacity, judgment capacity, ordinary citizen मानकर that सेटा democracy रे ही develop करी होबो. Okay, that is the virtue of democracy. Now comes the republic. What is republic? The sovereignty vested in the people and not the monarch. Monarch is an elected head, but monarch is a hereditary head. In republic, the head is elected. Okay, indirectly elected for 5 years. Article 56. Head of state is indirectly elected. In monarchy, head of state is hereditary. So republic ensures equal access to public offices. There is no privileged class. Okay, so everyone can contest elections and be the head of a state. That is the republic. Okay, now comes the idea of justice. Okay, justice और equality भितर बहुत बेले confusion हुए. तो गोटे जिनस मन रख, justice means the harmonization of interest between individuals, groups and communities. Okay, तो समस्त भितर conflicting stakeholders मान भितर हार्मोनी आने चेष्टा करे justice. Okay, तो preamble रे तुम justice को सब हाईएस्ट वैल्यू दिया है. ओके, तुम देखियो फास्ट जस्टिस रू ही स्टार्ट कराई सब हाईएस्ट वैल्यू दिखाई और जस्टिस भितर सोशल जस्टिस को ही हाईएस्ट वैल्यू दिखाई तापर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आछि. ओके, तो जस्टिस रा आइडिया कौन? ओके, तो इक्वालिटी कौन कहे? आमर इंडिया रे इक्वालिटी रो डिक्शनरी मीनिंग मीन्स ऑल आर इक्वल. ओके, ऑल आर इक्वल, बट जस्टिस कहे कौ जगार इक्वालिटी हेबा दरकार आ कौ जगार इनइक्वालिटी हेबा दरकार. ओके, एटा जस्टिस कहे. ओके, एटा गोटे सिंपल डेफिनेशन मु कहूँ, एटा एक्जाक्ट भी नुह बट सिंपल डेफिनेशन तुम जदि कह इक्वालिटी हूँ समस्ते इक्वाल, इक्वालिटी देखिए जे समस्ते इक्वाल हूँ. जस्टिस कहे कौ जगार इक्वालिटी करा जिवो कौ जगार इनइक्वालिटी भी करा जिवो. ओके, दैट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस. सो fair, equal and balanced treatment for all. Okay, that is the idea of justice inspired by the Russian Revolution where social, economic and political justice were enshrined. Okay, types of justice: distributive justice. Okay, social justice, economic justice and political justice. Okay, social justice कौन? Equal treatment. Equal treatment केते बड़े हबो? देखो, upliftment of SC, ST, OBC and women. Okay, जो माने vulnerable section अच्छी जो मानकर historical discrimination हेइचंती. Okay, तांकु टिके preferential treatment दवा दरकार, तांकु टिके unequal treatment दवा दरकार. Okay, equal should be treated equally, unequal should be treated unequally. That is the basic idea of justice. Okay, तो सोशल जस्टिस इक्वाल ट्रिटमेंट मीन्स समस्त को इक्वाल देखा बट से इक्वालिटी पेडेस्ट्रल को आने किसी अफर्मेटिव एक्शन भी देवाक पड़ो ताहले ही समस्ते इक्वाल ट्रिटमेंट पाइबे. ओके, सो दैट्स व्हाई अपलिफ्टमेंट ऑफ SC, ST वुमेन भी जस्टिस रे दैट इज कम्स अंडर सोशल जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस रिमूव इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी. पॉलिटिकल जस्टिस इक्वाल पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्सेस टू ऑफिसेस. एटा तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन रे आरंभ ही पॉलिटिकल जस्टिस दे दिया जाइथिला. ओके, तो आम देखिले जस्टिस आइडियाटा को बहुत ये दिखाई हाई फॉर्म रे दिखाई इन द प्रिएम्बल. सेटा फर्स्ट वैल्यू. ओके, आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड आमर जो जस्टिसटा दैट इज नॉट कन्फाइंड टू द लीगल जस्टिस एज एडमिनिस्ट्रेड बाय द कोर्ट्स. ओके, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी रोची आमर आइडिया ऑफ जस्टिस रे. ओके, सो जमती तुम सोशल जस्टिस तो देखिले आम तुम जमी DPSP रे सब अच्छी मुझे कहली तुम प्रोविजन ऑफ ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ, लीजर, रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटीज. ओके, सो एंड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर वीकर सेक्शंस एंड बैकवर्ड क्लासेस. ओके,
So these aim towards social justice. Economic justice means that the rich and poor should be treated alike, and the efforts should be made to bridge the gap between them. Okay, तो तमर जो progressive taxation, that is a tool towards economic justice. Okay, political justice तो तुमको universal adult franchise already constitution रो आरंभ रू दिया है. Okay, so जस्टिस उपर भी तुम कही नेहरू आंबेडकर कही दैट पॉलिटिकल जस्टिस जेहेतु फास्ट तो दिया ही हो जाए पॉलिटिकल जस्टिस विल बी मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस. ओके, बिकॉज आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस से आसपार व्हेन सोशल जस्टिस इज गारंटेड. ओके, सोशल जस्टिस बिकज आवर सोसाइटी रे रिलीजन कास्ट क्रीड रे बहुत गुड डिस्क्रिमिनेशन होता. ओके, तो से सब रिमूव करने को हेले तुमको किसी पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन देवा पड़ो. अफर्मेटिव एक्शन हेले ही लोक मैंने कैपेबिलिटी रे इक्वाल हेबे. ओके, कैपेबिलिटी रे इक्वाल हेबे. कैपेबिलिटी रे इक्वाल हेले ही से माने काम भल कर पारिबे. काम जदि समस्त ठीक से कर पारिबे ताहले जाइंकी इकोनॉमिक स्फीयर रे से माने इक्वाल हो पारिबे, इकोनॉमिक जस्टिस पाइबे. इकोनॉमिक जस्टिस रे जदि पाई पारले देन ट्रू सेंस रे पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लीमेंट करि हबो इंडिया रे. ओके, दैट इज द आइडिया. सो framework of justice protected the fundamental rights and DPSPs. Already said, I have said this. And concept किसी related concept जेमती social capital, human capital, physical capital. Okay, social capital means तमर society रे केते bonding अच्छी, केते trust अच्छी लोक मान भितरे, केते value share करूचंती, तांका भितरे network अच्छी, तो जनकर असुविधा पड़ले अलगा माने आसुचंती कि नहीं. These are the elements of social capital. Human capital, that is literacy केते, workforce capacity केते towards the economic growth only. Okay, physical capital, infrastructure, buildings, all these are included in physical capital. Okay, now liberty is the liberty रा दीटा डेफिनेशन अच्छी. गोटे हूँ यहाँ आगे देखीदे नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी इज द क्लासिकल फॉर्म. ओके, क्लासिकल फॉर्म ऑफ लिबर्टी. मुझे जमी तुम फास्ट कहली फास्ट कैपिटलिज्म आसला. कैपिटलिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जी भल जी जार एबिलिटी अच्छी जी सर्वाइव कर पाला कठोर कंपिटिशन से ही तिष्ठिब, बाकी सब एलिमिनेट हो. ओके, तो क्लासिकल फॉर्म ऑफ लिबर्टी is associated with the capitalistic idea of liberty that state should not interfere in the affairs of people. खाली गोटे लॉ अच्छी, लॉ को इम्प्लीमेंट करवा स्टेट काम. स्टेट आउ किछि काम नहीं, स्टेट आउ किछि काम नहीं. सो absence of restraint, freedom to make choices. Okay, these are the idea of negative liberty. Okay, state should not do anything other than being a umpire in the game. State should act as a umpire in the game. State should not play the game. Okay, positive liberty कौन कहूँ जे state has to interfere to promote the liberty of people. Okay, एथिरे liberty meaning कौन positive liberty रे जे तुमर कैपेबिलिटी बढ़िले ही लोक मैंने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर. तुम खाली कहीदेव जो फ्रीडम समस्ते अच्छा तो सेटा एडिक्वेट नुह. बिकज समस्त किसी हिस्टोरिकल पास्ट अच्छी, डिस्क्रिमिनेशन होती, कहार किसी बैकग्राउंड अच्छी, तो एवरीवन इज नॉट इक्वल. तो स्टेट काम हो टू बिल्ड द कैपेसिटी. ओके, टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ पीपल. लोक मान को कैपेबल करेले, हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एगुड़ा सब भल करेले ताहले ही लोक गेम खेली पारे ऑन इक्वल टर्म्स. ओके, स्टेट शुड नॉट जस्ट बी द एम्पायर, स्टेट शुड ऑल्सो मैनेज द गेम. ओके, स्टेट शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द गेम. ओके, सो दैट इज द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. जे तुमर जोटा कि लॉक भी कही थे वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम. ओके, जे तुमर जदि लॉ रहिबो ताहले लॉ लोक मान कैपेबिलिटी बिल्ड कर पारिबो. कैपेबिलिटी बिल्ड हेले लोक माने बेटर परफॉर्म कर पारिबे. जदि लोक बेटर परफॉर्म कर पारले ताहले से माने ट्रू सेंस रे फ्रीडम पाई पारिबे. ओके, जदि स्टेट इज वेरी एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी. बट क्लासिकल फॉर्म रे कौन कहे एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज ए नेसेसरी इविल. स्टेट एक्जिस्टेंस अच्छी बट दे कन्सिडर द एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज ए नेसेसरी इविल. स्टेट्स रो एक्जिस्टेंस खाली सेतिकी जे इट शुड इम्प्लीमेंट द लॉ एंड ऑर्डर, इट शुड नॉट प्ले द गेम. ओके, कहार हिस्टोरिकल इंजस्टिस होती कौन होती दैट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ द स्टेट. ओके, सो लिबर्टी रो क्लासिकल गोटे, मॉडर्न डेफिनेशन गोटे. दैट इज क्लासिकलटा हूँ नेगेटिव लिबर्टी, मॉडर्न डेफिनेशन इज पॉजिटिव लिबर्टी. सो absence of restraints, freedom to make choice, but it was inspired by the French Revolution. Okay, लॉक का आइडिया मैं कहली. प्रिएम्बल रे कहुई लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. ओके, तो ये मुझे कहली सेकुलरिज्म आइडिया भी एथरे इनहेरेंट अच्छी. लोक मैंने फ्री टू
have their own thought, expression, belief, faith and worship, and this liberty is qualified. Okay, it is not absolute. Okay, that is limited by the constitution and the law. तमर जो reasonable restriction अच्छी, so that can restrict the liberty of people in different times. Okay, so this is the idea of liberty. Then comes the equality. Equality देखो इंडिया रे केवल दीटा जिनस अच्छी, equality of status and equality of opportunity. Okay, इंडिया रे equality of outcome नहीं, एटा मन रख. इंडिया रे equality of outcome नहीं. Okay, please note this. तमर preamble रे ही लिखी देखो इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी. ओके, केवल स्टाटस और इक्वालिटी ऑफ स्टाटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ही दिखाई इंडिया रो इक्वालिटी. ओके, इक्वालिटी ऑफ आउटकम नुह. ओके, बेले बेले एटा कन्फ्यूजन रे आसे जे रिजर्वेशन पॉलिसी सेटा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना इक्वालिटी ऑफ आउटकम. जे गोटे गोटे पिला सपोज 100 मार्क रखिकी सपोज जदि जनरल कैटेगरी सपोज प्रिलिम्स क्वालिफाई करुच्ची, आ गोटे रिजर्व कैटेगरी पिला 90 मार्क्स रखिकी जदि प्रिलिम्स क्वालिफाई करुच्ची, देन तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम ही होगला ना. जी 100 रखिला से क्लियर कला, जी 90 रखिला क्लियर कला नाई. सेटा एक्चुअली तुम जदि वाइड कॉन्टेक्स्ट देखिबो तो ये जो रिजर्वेशन जहाँ को दिखाई तार किसी हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होती, तो से डिस्क्रिमिनेशन जेहेतु होती ताकू इक्वाल ग्राउंड को आनिया जे स्टेट चाहूँगी सी भी सिविल सर्विस रे पार्टिसिपेट करू, से इक्वाल ग्राउंड रे आनिया ताकू किसी अफर्मेटिव एक्शन तापाई कराई जोटा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कराई जो यही जिनसा दिखाई. सो दिस इज एन इक्वालिटी. यही जो स्टेपटा नियाई रिजर्वेशन जो स्टेपटा नियाई दैट इज टुवर्ड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके, अपॉर्चुनिटी टू engage that section in the civil services despite of historical discrimination. Okay, so that is not equality of outcome. Okay, that is not equality of outcome. So ये जिनसा नोट करो, इंडिया रे खाली इक्वालिटी ऑफ स्टाटस अच्छी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अच्छी. ओके, and आमर equality in political science does not mean that everyone is equal in every circumstance. Okay, so everyone has different physical, mental, economic differences and the okay, so तो तुमर ये इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी युड़ा ही दिखाई ता माने नुह जे समस्त को ही इक्वाल करदेव. ओके, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इक्वालिटी नुह. ओके ओके, तो डायमेंशंस सो एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी माने कहा को स्पेशल प्रिविलेज दिया जीवनी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जीव. ओके, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज मीन्स इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया. ओके, प्रिएम्बल रे ओके एमती किसी स्पेशल ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन आम इक्वालिटी किसी किसी आइडिया डिराइव कर पारिबा. दैट इज सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सिविक इक्वालिटी आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑन जॉब्स, 17 abolition of untouchability, 18 abolition of articles. Political equality जिन universal electoral roles under article 325 and 326 universal adult suffrage. Economic inequality under article 39 जोटा कि तमरो DPSP, equal pay for equal work, right to livelihood. Okay, economic inequality रे also means that for the same ability and the same labor the salary should also be same. Okay, and also that one man or one class should not exploit another man or another class. Okay, so this is all about the value equality. Okay, it promotes a just and fair society. Okay, so I think तुम justice और equality भितर difference बुझी पार्थिबो. Okay, equality justice होउजी को जगह रे इक्वल को इक्वल ट्रीट करिबा, को जगह रे इक्वल को अनइक्वल ट्रीट करिबा. ओके, दैट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस. इक्वालिटी केवल इंडिया रे स्टाटस और अपॉर्चुनिटी रो इक्वालिटी ऑफ स्टाटस दिया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया है. ओके, जस्टिस इज treat equals equally, treat unequals unequally. Okay, that is justice. Equality means equality of status and equality of opportunity in context of India. Okay, now comes the idea of fraternity. So it is the sense of brotherhood and sisterhood among all Indians. Okay, Ambedkar said fraternity is the sentiment of shared belongingness and unity. Okay, it strengthens the national integration and dignity of individual. So ये किसी बुझीबार नहीं. Okay, so preamble रे fraternity ऊपर fraternity ensuring dignity of individual and जदि dignity of individual ensure होला then unity and integrity of nation बजाय रहिबो. Okay, so fraternity पाई कौन सब steps निया है, that is single citizenship, fundamental rights provision अच्छी, DPSP, fundamental duties. Okay,
then the fundamental article 51A रे तमर every citizen must promote harmony and common brotherhood beyond religion, linguistic, regional and sectional diversities. Okay, so this is the idea of fraternity and dignity of individual enshrined in the preamble. Okay, national integration, unity and integrity ର भी value ଅଛି. It has both psychological and territorial aspects. Territorial aspects means integrity of India, that India is a union. It's a indestructible union, so that is the territorial aspect. Psychological aspect means जदि भी आमे से territory भितर ना हो, जदि आमे territory बाहर भी अच्छु, then we are bound by the same identity as an Indian. Okay, so unity has both psychological and territorial aspect, जोटा कि article 1 रे अछि. India is a union of states. Because it is a union of states, it cannot be broken, it is indestructible. Union of states कहिबार कारण होछि to counter the ugly values like the communalism, regionalism, casteism, linguism, secessionism. Okay, एगुडा को काउंटर करिया पई इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करा गला, दैट इज ए indestructible union of destructible states. Okay, term integrity was explicitly added by the 42nd CAA. Okay, एथरे भी किछि माने खराब नाही, because the notion of integrity was already enshrined in article 1 of the constitution, where India is a union of states. This union is indestructible. Okay, gotte value अछि unity of trinity. Okay, ए जिनसटा important. Unity of trinity, what is the trinity? Liberty, equality and fraternity. Okay, ए तीनटा value equally, ये तीनटा वैल्यू जदि ठीक से इम्प्लीमेंट हला, देन ओनली सोशल डेमोक्रेसी कैन कम इन इंडिया. ओके, व्हाट आर द थ्री वैल्यूज? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, दे आर इनसेपरेबल प्रिंसिपल्स. ओके, बिकज तुमर जदि इक्वालिटी नहीं, केवल लिबर्टी अच्छी, जमी मुझे लिबर्टी कहली, इक्वालिटी नहीं केवल लिबर्टी अच्छी. जदि देख एव्री समस्ते एव्री इंडिविजुअल भैरीज इन टैलेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. ओके, तार कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, टैलेंट समस्त अलग अलग अलग. जदि समस्त की छाड़ दिया जाए तुम फ्री कंपटीशन कर, देन किसी अल्प लोक उठीजे ऊपर को, बिकज तांकर ऑलरेडी सब रिसोर्सेस अच्छी. आउ केते लोक सेते हाइट को उठी पारिबेनी. ओके, जदि जेहेतु सेते हाइट को उठी पारिबेनी, किसी लोक केवल लिबर्टी अच्छी बहुत ऊपर को पळेले, देन सोसाइटी रे इनइक्वालिटी रहिबो. ओके, जदि इक्वालिटी आमको आमे मेंटेन करवानी, केवल लिबर्टी देदेवा, देन डोमिनेंस ऑफ फ्यू ओवर मेनी. जो माने टैलेंटेड, जो माने ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, से माने बहुत ऊपर पळेबे, बहुत लोक तळे ही रही जिवे. ओके, सो विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी विल लीड टू डोमिनेंस ऑफ फ्यू ओवर मेनी. विदाउट लिबर्टी इक्वालिटी विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. ओके, जदि लिबर्टी दिया हलानी, जदि कहला जे सब बेले समस्त को ही इक्वाल रे आमे करवा. ओके, जदि गोटे लोक फॉर एग्जांपल गोटे लोक जदि 10 घंटा काम करुच्ची दिन को. ओके, 10 घंटा काम करुच्ची दिन को, आ गोटे लोक 2 घंटा काम करुच्ची दिन को, तथापि 10 घंटा जी काम करुच्ची ताको सेम रिवार्ड मिलिबो, 2 घंटा जी काम करुच्ची ताको सेम रिवार्ड मिलिबो, बिकज वी आर कमिटेड टू द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी. ताहले कौन हम ये 10 घंटा जी काम करुच्ची, सी भाव मु कहीं 10 घंटा काम करी, जी 2 घंटा काम करुच्ची सी तो सेम जिनस पाउची, मु भी तो सेम जिनस पाउची. सो विदाउट लिबर्टी, विदाउट recognition of talent, okay, only commitment to equality will kill individual initiative. से कह मु कहीं एत घंटा काम करुच्ची, मु तो किसी 2 घंटा कले भी सेम फ्रूट पाइबी, मु कहीं करी अधिका. सो इट विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. ओके, तो आम देखिले केवल इक्वालिटी कले, केवल लिबर्टी देदेले इनइक्वालिटी आसो सोसाइटी रे. केवल जदि ओनली भी जदि आम इक्वालिटी रे कमिटमेंट रहीकि देखा, लिबर्टी आड़ को लिबर्टी न देवा, माने टैलेंट को एप्रिशिएट न करवा, देन इंडिविजुअल जे टैलेंटेड लोक तार भी इनिशिएटिव डेड हो. ओके, टुगेदर तुमरा यूनिटी, लिबर्टी आ इक्वालिटी दी जन को सेम वैल्यू देला परे ही तुमर नेशन रो एडिक्वेट ग्रोथ आड़ को जीव. ओके, नेशन रो एडिक्वेट ग्रोथ आड़ को जीव. जदि नेशन ग्रो करिवो ताहले ही सोसाइटी रे फ्रैटर्निटी मेंटेन होगी रहिबो. ओके, फ्रैटर्निटी मेंटेन होगी रहिबो. जदि फ्रैटर्निटी मेंटेन होगी रहिला, तुमर यूनिटी, नेशनल यूनिटी भी रहिबो, इंटीग्रिटी भी रहिबो. ओके, सो अगेन जदि तुमर सेम जिनस तुमर सोशल डेमोक्रेसी जस्टिस रे भी देखि परियो, तुमर जदि विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी, विदाउट इक्वालिटी ओनली लिबर्टी दिया गला, देन डोमिनेंस ऑफ फ्यू ओवर मेनी, तुम सोशल जस्टिस एनश्योर करी हबनी. ओके, जदि तुम केवल इक्वालिटी देल, ताहले तुमर इकोनॉमिक ग्रोथ हो पारिबनी, बिकॉज इंडिविजुअल इनिशिएटिव इज किल्ड. ओके, तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन यूनियन टू एनश्योर ट्रू डेमोक्रेसी. ओके,
तो सही हिसाब रे ही वैल्यू गुड़ा को सब ऐड कराई प्रिएम्बल रे आगे जस्टिस दिगला सोशल जस्टिस दिगला हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को काउंटर करने सोशल जस्टिस दिगला सोशल जस्टिस कलापर लोक मानकर इक्वाल कैपेबिलिटी है से इक्वाल इन इकोनॉमिक टर्म्स हेले इक्वाल इन इकोनॉमिक टर्म्स है ही से ट्रूली पॉलिटिकल इक्वालिटी आड़ को गले ओके पॉलिटिकल इक्वालिटी आड़ गले जहाँ केवल जदि तुम कहली पॉलिटिकल इक्वालिटी कहीदेव तो से तुमर जदि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस कर नथिबो तो एगेन पॉलिटिकल इक्वालिटी ओनली जदि कहबो देन ऑलरेडी डोमिनेंट कास्ट और जे माने जो मानक पैसा अच्छी से माने ही पॉलिटी को रूल करेंगे तुम ट्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बेहले आसी पारिबो नाही ओके आगे जस्टिस गला जस्टिस पर तुमको लिबर्टी दिगला ओके लिबर्टी पर तुमको इक्वालिटी भी दिगला ओके इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दिगला ये तीनटा जदि तुम फल से इम्प्लीमेंट हो गला देन ओनली फ्रैटर्निटी अमंग इंडिविजुअल्स आसीबो फ्रैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स जो आसो तुम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बजाय रहिबो ओके तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रिएम्बल नाउ सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑन द प्रिएम्बल तो ये जिनसा देख तुम इन दी बेरुबारी यूनियन केस सो जस्टिस गजेंद्र गडकर ही सेड दैट preamble was not a part of constitution okay preamble was not a part of the constitution so preamble can only act as a guide to interpret the constitution but it is not a part of the constitution okay तापर तुम सज्जन सिंह केस रे भी जो लास्ट सेशन में कहली सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस रे जस्टिस माधवलकर ही सेड दैट preamble had the stamp of deep deliberation preamble was marked by precision and the framers of the constitution attached special significance to preamble okay so preamble was an epitome to the broad features of the constitution okay तो सज्जन सिंह केस रे तुम डिसेंट जजमेंट रे तो रिकॉग्नाइज करागला जे यस प्रिएम्बल शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एते इंपोर्टेंट जिनसटा को आमे नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहि परिबा नै ओके देन कम्स दी गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस वेयर जस्टिस I think Justice Hidayatullah he said that preamble contains the principles that are essential for government functioning okay eternal and unalterable essence okay लिखा भी Justice Hidayatullah okay so preamble रे constitution रा eternal और unalterable essence अच्छी okay so this preamble is a declaration of our faith and belief in the fundamentals of national life and a standard form from which we should not depart okay so preamble रो importance को एथरे तुमरो असर्ट करागला ओके देन केशवानंद भारती ओके केशवानंद भारती केस रे सो इट रिवर्स द बेरुबारी यूनियन जजमेंट दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट preamble is now part of the constitution and preamble is part of the constitution and the preamble also it can be amended but not in a way that destroys the basic structure okay so preamble रो एते सब important value अच्छी जे preamble रो ही आमे कहि परिबा preamble रो ही evolution of basic structure doctrine हेजी एटा भी आमे कहि परिबा because of the important values that are enshrined in the preamble तो आमे कहि भी परिबा that preamble रो ही तमरो basic structure of evolution बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो इवोल्यूशन हेची ओके देन तमरो एलआईसी ऑफ इंडिया केस रे भी तमरो सुप्रीम कोर्ट अफर्म करछि जे प्रिएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो गोटे कथा एतरे मिस कराइ छि जे तमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे वोट करा गला बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मूव्ड द मोशन दैट द क्वेश्चन इज दैट प्रिएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो से मोशन रे से मोशनटा पास होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ओपिनियन थिला दैट प्रिएम्बल इज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके बिकॉज द मोशन दैट रेज द क्वेश्चन दैट इज प्रिएम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द असेंबली ओके सो दैट्स व्हाई एबर प्रेजेंट कंडीशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होची प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इन लाइन विथ द डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो ओके so also Supreme Court भी कही that preamble is also very much part of the constitution and constitution should be read and interpreted in the light and grand and noble vision that is contained in the preamble okay so this was for today.